So after Jagdeep Dhankar resigned from the post of Vice President, big developments have been emerging from top sources. According to sources, the next Vice President will be from the BJP. The upcoming Vice President is expected to be aligned with the BJP ideology. Earlier, there were in fact speculations about JDU leader and Union Minister Ramnath Thakur, as we were just bringing to you. However, sources have called those reports baseless. Ramnath Thakur's recent meeting with the BJP President JP Nadda was a routine interaction, is what's being said. There has been no discussion with the JDU leadership regarding Thakur or the Vice President's post. Meanwhile, many theories are also circulating about why Dhankar resigned in the first place. As per sources, the government made 3 separate attempts to dissuade the Vice President from accepting the opposition's impeachment motion in the Rajya Sabha. BJP's top brass urged Dhankar to wait, but he remained firm on his stance. A key point of contention that added to the differences was the government refusing Dhankar's request to oversee the visit of US Vice President J.D. Vance. Another issue stemmed from Dhankar's vehicle fleet overhaul not being accepted. जो धनखड़ जी का रिजिग्नेशन अब किस लिए किया मुझे पता नहीं, वो अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना को देना है, क्योंकि पिछले बार हमारा वेंकैया नायडू था, राष्ट्रपति बनाने के लिए चर्चा हुए, उनका अन्याय किए, वापस भेज दिए दिल्ली से, घर खाली करवा देके तेलुगु भाषा बोलने वाले को आप घर वापसी कर दिए। साउथ और खासकर तेलंगाना में जितने भी ओबीसी है, सबका गला काट दिए एनडीए ने। मुझे खुद जानकारी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ये बताया गया कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्वास्थ्य देखने नहीं जा रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य उनका ठीक है कि नहीं है। उन्होंने तो खुद से लिखा है कि हेल्थ इश्यूज के कारण, पर किसी के गले बात नहीं उतर रही है, क्योंकि दिन भर जिस तरह से वे उन्होंने सबसे वो मिले और पार्लियामेंट में भी आए, बल्कि इसके पहले वाले सेशन में वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था, तो उस समय तो माना जा सकता था कि अगर उस समय वो रिजाइन करते तो कोई इसको अदरवाइज नहीं लेता। बट अभी और फिर ये सेशन भी पूरा नहीं किया, इतना अधिक सीरियस भी नहीं लग रहे थे कि सेशन ही पूरा नहीं कर पाएंगे। Now, former Vice President of India, Jagdeep Dhankar's shock resignation on the first day of the Parliament's monsoon session caught everyone by surprise, with the opposition left speculating the reason behind the sudden exit. But what followed was even more shocking. Despite repeated attempts by different leaders, Jagdeep Dhankar was unreachable. On top of that, he reportedly started packing right after his resignation was submitted.